हाय गाइस, वेलकम बैक टू कंपटीशन क्रूसेड। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो दैट वी हैव स्टार्टेड, द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्नड ऑफ ax plus by is equal to c एंड दिस इज अ फेयरली इजी क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग 1 या 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दैट कैन बी टेस्टेड इन टेस्ट सेटअप्स लाइक कैट। हाउएवर मतलब पूछे भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इट्स समवेयर अराउंड इजी मॉडरेट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने का। सो लेट मी जस्ट रिड्यूस द क्वेश्चन पैलेट अ लिटिल बिट। सो it's a very interesting one. It says 13x minus 11y is equal to 43 where x is a positive integer. Now हमारे को कंडीशन किस पे गिवन है? हमारे को x पे कंडीशन गिवन है कि x is a positive integer. Okay. Now इसमें सवाल करता है कि find the possible values of x, y. Okay, तो ordered pair ही निकालने बोल रहा है जो हम लोगों ने पिछले बारी में सीखा था, but there is a constraint which is given on x, that x can only range between actually x has to be greater than 16 and less than 40. Okay, so what we do is we will just start off by I'm just rewriting this equation. 13x minus 11y is equal to 43. नाउ एल्गोरिदम हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, समझ लिया। एल्गोरिदम ये कहता है कि हमें इसको सबसे पहले तो लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म में लेके जाना है, विच इज ऑलरेडी 13 एंड 11 एनीवेज डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, सो दे आर ऑलरेडी रिड्यूस इन द कॉमन रिड्यूसिबल फॉर्म। ओके, नाउ द थिंग इज कि वी नीड टू फाइंड आउट द फर्स्ट सोल्यूशन। सो द फर्स्ट सोल्यूशन कैसे निकाले? फर्स्ट सोल्यूशन ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे एंड वी हैव टू फाइंड आउट एक्स वाई, द फर्स्ट सोल्यूशन, और यू कैन से द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सो सी यहां पे टेबल्स बहुत काम में आते हैं। अगर आपको टेबल्स याद है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको टेबल्स उतने याद नहीं है तो फिर आई विल सजेस्ट कि आप टेबल्स थोड़ा सा रटना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मोस्टली आपको 1 2 3 4 तक अगर 13 to 19 टाइप टेबल्स याद हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा अलजेब्रा करना पड़ सकता है। बट अगेन I can clearly see that if I substitute 11 into 2, this becomes 22, right? So this is already 13x minus 22 is equal to 43. Now see, this thing is 22. So if I add 22 to 43, this in turn becomes 65. And I know 13 5s are 65. So x का वैल्यू आता है 5, y का वैल्यू आता है 2. This can be considered as one of my ordered pairs. Now what we can do is, so यहां से हम लोग थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। हम लोगों ने पहला इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। Now what we will do is we will just try and figure out कि 11 and rather 5 and 2 को हम लोग कैसे सेटअप करें। तो देखिए कैसे आराम से इसको बनाते हैं, ठीक है। So we can just eliminate everything. And honestly speaking, this is all that is required. You really do not require anything more than this. So I can just write 13 times 5. This is also not required, but I'm just writing it. 11 times 2 is equal to 43. Okay. Now tell me something. This is my first equation, or rather this is my first solution. But is this solution allowed? Obviously not, because in the statement it is written that x needs to be greater than 16 and lesser than 40. So let me write the second pair of equation, which will be 13 times something 11 times something, which will be equal to 43. Now guys, I will again ask you, tell me whether this is an increasing line or decreasing line. Always this is not a decreasing line, this is an increasing line. So if x increases, y also increase. And always remember that x will increase in the coefficient of y, in the steps of coefficient of y, and y will always increase in the steps of the coefficient of x. Okay, so you can see 11 and 5. So the next solution will be 16, because x is now increasing in the step of coefficient of y, okay, which is 5 plus 11, which is 16, and this one will be 13 plus 2, which is 15. Now again, hold on for a while,
and tell me, is this acceptable? Is this acceptable? The answer to that is no, because we need a solution pair in which the value of x is more than this thing. So all that I need to do is I'll just need to add 11 into it. So I'll just add 11, so I'll get a 7, 27. Okay, I hope I'm not making any mistake. And 11 times I will add 13 to 15, so this is going to be 28. Okay, so this is my third equation that I'm getting. Okay, now let me try to write out the next one, which is okay. Okay, so the next one will be again, you will add, how much you will add? You will add 11 into this thing, so this will become 38, and this will become, you will add 13 to 28, this will become 41. Okay, I hope I haven't made any mistakes. Okay, so this is my solution pair number 4. Now I must tell you that this is not acceptable. This is acceptable, this is acceptable. If I add 11 into it, this will become 9, and this will become 49. Okay, 13 times 49. Now you tell me, is it acceptable? Obviously not, because I know that the range of x is only from 16 to 40. So 49 is not accepted. Okay, and since 49 is not accepted, I know that the possible values of x and y are only there are only 2 ordered pairs. So the first one is 27 and 28, and 38 and 41. So this is the only possible ordered pair for the particular condition. I hope this made sense. ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो. अगर आपको चाहिए तो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कि 43 आता है कि नहीं. I'm not going to do that because you know it's irrelevant for this question. So I hope you enjoyed something. I hope you like the video. If you did, you know the drill. ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को. ठीक है guys, I will always beg for your like and subscribe, because you know it is only with your support that I can grow. Okay, thank you very much. This is me, Somajit Goswami, signing out. Happy learning.